जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता तृतीये पार्वती खंड। अथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच एतस्मिन्नन्तरे त्वं हि विष्णुना प्रेरितो द्रुतम् अनुकूलयितुं शम्भुम् यास्तनिकटे मुने तत्र गत्वा स वै रुद्रो भवता सुप्रबोधितः स्तोत्रैर्नानाविधैः स्तुत्वा देवकार्यचिकीर्षया श्रुत्वा त्वद्वचनं प्रीत्या शम्भुना द्रुतमुद्धृतं स्वरूपमुत्तमं दिव्यं कृपालुत्वं च दर्शितं तददृष्ट्वा सुन्दरं शम्भुं स्वरूपं मन्मथाधिकम् अतिह्यष्टो मुने त्वं हि लावण्यपरमायनं स्तोत्रैर्नानाविधैः स्तुत्वा परमानन्दसंयुत आगच्छस्त्वं मुने तत्र यत्र मेनास्थिताखिले तत्रागत्य सुप्रसन्नो मुनेति प्रेमसङ्कुल हर्षयंस्तां शैलपत्नीं मेनां त्वं वाक्यमब्रवीत्। नारदुवाच मेने पश्य विशालाक्षि शिवरूपमनुत्तमं कृता शिवेन तेनैव सुकृपा करुणात्मना। ब्रह्म उवाच श्रुत्वा सा त्वद्वचनो मेना विस्मिता शैलकामिनी ददर्श शिवरूपं तत्परमानन्ददायकं कोटिसूर्यप्रतीकांशं सर्वावयवसुन्दरं विचित्रसवनं चात्र नानाभूषणभूषितं सुप्रसन्नं सुहासं च सुलावण्यमनोहरं गौराभं द्युतिसंयुक्तं चन्द्ररेखाविभूषितं सर्वे देवगणैः प्रीत्या विष्णुवाद्ये सेवितं तथा सूर्येण छत्रितं मूर्तिं चन्द्रेण च विशोभितं सर्वथा रमणीयं च भूषितस्य विभूषणे वाहनस्य महाशोभा वर्णितुं नैव शक्यते गंगा च यमुना चैव विद्यत स्म सुचामरे सिद्धयोष्ठौ पुरस्तस्य कुर्वन्ति स्म सुनर्तनं मया चैव तदा विष्णु इन्द्राध्याह्यमरास्तथा स्वं वेषं सुसभ्यूष्ण गिरीशेनाचरन्युता तथा जयेति भाषन्तो नानारूपा गणास्तदा स्वलङ्कृतं महामोदा गिरीश पुरतोचरन् सिद्धाश्वो पशुराः सर्वे मुनयश्च महासुखा ययुषीवेन सुप्रीता सलकाश्वा परे तथा एवं देवादय सर्वे कुतूहलसमन्विता परं ब्रह्म गुणस्तस्ते स्वपत्नीभिरलङ्कृता विश्वाससुमुखास्तत्र यप्सरो गणसंयुता गायन्तोऽप्यग्रतस्तस्य परमं शाकरं यश इत्यं महोत्सवस्तत्र बभूष मुनिसत्तम नानाविद्यो महेशे हि शैलद्वारी च गच्छति तस्मिंश्च समये तत्र सुषमाया परात्मन वर्णितुं तां विशेषेण कः शक्नोति मुनीश्वर तथा विद्यं च तं दृष्ट्वा मेना चित्रगता इव क्षणमासीत् ततः प्रीत्या प्रोवाच वचनं मुने मेन उवाच धन्यपुत्री मदीया च यया तप्तं महत्तप यत्प्रभावन्महेशान् त्वं प्राप्त इदं मद्गृहे
मया कृता पुरा या वै शिवनिन्दा दुरत्यता तां क्षमस्व शिवा स्वामिन् सुप्रसन्नो भवाधुना। ब्रह्म उवाच इत्थं सम्भाष्य सामेन संस्तुयेन्दुललाटम् सा जलीप्रणता शैलप्रिया लज्जापराभवत्। तावस्त्रियसमाजग्मुं हित्वा कामाननेकश बहयस्तापरवासिन्य शिवदर्शनलालसा। मञ्जनं कुर्वती काचिन् चूर्णसहिताययो द्रष्टुं कुतूहलाढ्या च शङ्करं गिरिजावरं। काची तु स्वामिन सेवां सखीयुक्ता विहाय च शुचामरकरा प्रीत्या गाच्छम्भोर्दर्शनाय वै। काची तु बालकं हित्वा पिबन्तं स्तन्यमादरात् अतृप्तं शङ्करं द्रष्टुं ययौ दर्शनलालसा। रशनां बध्नति काचित् यैव सहिताययो वसनं विपरीतं वै धृत्वा काचिद्दयो तत। भोजनार्थस्थितं कान्तं हित्वा काचिद्ययो प्रिया द्रष्टुं शिवावरं प्रीत्या सतृष्णासु सकुतूहला। काचिद्वस्ते शलाकां च धृत्वाञ्जनकरा प्रिया अर्जित्वैकाक्षी संद्रष्टुं ययो शैलसुतावरं। काची तु कामिनी पादो रजयन्ती हलत्तकै श्रुत्वा घोषं च तद्वित्वा दर्शनार्थमुपागता। इत्यादि विविधं कार्यं हित्वा वासं स्त्रियो ययु दृष्ट्वा तु शाङ्करं रूपं मोहं प्राप्तास्तदा भवन्। ततस्ता प्रेम संविघ्ना शिवदर्शनहर्षिता निधाय यदितन्मूर्ति वचनं चैनमब्रुवन्। पुरवासिन्य ऊचु नेत्राणि सफलान्यासन् हिमवत्पुरवासिनां यो यो पश्यददो रूपं तस्य वै सार्थकं जनु त्यस्यैव सफलं जन्म तस्यैव सफला क्रिया। येन दृष्ट शिव साक्षात् सर्वपापप्रणाशक पार्वत्या साधितं सर्वं शिवार्थे यत्तपकृतं धन्येयं कृतकृत्येयं शिवा प्राप्य शिवं पतिं। यदिदं युगलं ब्रह्मा न युज्यात् शिवयोर्मुदा तदा च सकलोऽप्यस्य श्रमो निष्फलतामियात्। सम्यक् कृतं तथा वाच्चात्र योजितं युग्ममुत्तमं सर्वेषां सार्थता जाता सर्वकार्या समुद्भवा। विना तु तपसा शम्भुर्दर्शनं दुर्लभं नृणां दर्शनां शङ्करस्यैव सर्वे याता कृतार्थतां। लक्ष्मीर्नारायणं लेभे यथा वै स्वामिनं पुरा तथा सौ पार्वती देवी हरं प्राप्य सुभूषिता। ब्रह्माणं च यथा लेभे स्वामिनं वै सरस्वती तथा सौ पार्वती देवी हरं प्राप्य सुभूषिता। वयं धन्या स्त्रियः सर्वा पुरुषा सकलावरा ये ये पश्यन्ति सर्वेषां शङ्करं गिरिजापतिं। ब्रह्म उवाच इत्थमुक्त्वा तु वचनं चन्द्रनैश्वाक्षतैरपि शिवं समर्चयामासुर्लार्जान्वन् पुरुषादरात्। तस्थुस्तत्र स्त्रियः सर्वा मेनया सहसोत्सुका वर्णयन्तोऽधिकं भाग्यं मेनयाश्च गिरेरपि। कथास्तथा विदा शृण्वंस्तत्र
तद्वामा वर्णिता शुभा प्रहष्टो भूत्प्रभु सर्वैर्मुने विश्वादिभिस्तदा। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवसुन्दरस्वरूपपूर्वास्युत्सवर्णनं नाम 45. जय गुरुजी।